I would like to invite Dr. Anil Kumar Gupta, sir, HOD, ECTRM Division, NIDM. Sir, can you hear me? Gupta sir. Gupta, sir? Hello. अवधेश जी उनका माइक अनम्यूट करेंगे काइंडली. हाँ गुप्ता साहब, ऑडिबल है सर. now. Okay, sir. We are eagerly waiting for your presentation. Yes, sir. जी. Thank you sir. Thank you sir. So kind of. So thank you for today is the last day. Last day है ना आज तो. Yes, Alright, yes, alright, sir. sir. Okay. हाँ, so अभी काफी नॉलेज हो गया, अभी ज्यादा वो ओवरफ्लो भी हो रहा होगा. So but anyway, I was listening to all the presentations and presentations were very useful, and आशीष जी का presentation था and then अवधेश का था. Both the topics were very important. So now I will be taking you to a little different journey. So there are so many technical dimensions we have listened, so many governance issues and procedural dimensions also we have listened. And now I'll take you to a spiritual journey. Kindly sir. Is my screen visible? Visible sir. Kindly Yes, go sir. ahead. Yes, sir. Sir, I'll make the Screen mode कर दीजिए. हाँ, thank you sir. Okay. और full screen आ रहा है ना? आ गया sir. Kindly go. आ गया. ठीक है. So we have already discussed that disaster management is a multidisciplinary subject, है ना? It means it requires the knowledge of science, it requires the knowledge of engineering, it requires various other streams also their knowledges. So many things are there and which were already existing. But when the disaster takes place, am I audible, Ashish ji? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Clearly sir. Kindly go ahead. When a disaster strikes, any major disaster, then later we realize that there has been something lacking, there has been some small issues which we failed to address, and then the disaster took place. ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है sir. Right, sir. Yeah. Definitely. Because, and second thing, any major disaster also gives a kind of a forewarning. This is also a reality. Even if we take the Bhopal disaster, so Bhopal disaster, when it happened, around 7-8 months before a death occurred because of the phosgene poisoning. Kolkata flyover collapse, जो bridge collapse हुआ था, under construction bridge collapse हुआ था. So few months before, some nuts, bolts and some other parts were falling. So similarly, any major disaster, there are always some kind of precursors. Uttarakhand disaster, 2013, the major calamity took place. But it is not that the Uttarakhand was not having the disasters. Uttarakhand was regularly getting the disasters. So what happens when we ignore small and the lower order risks, we are then inviting the major disasters. So this is also an important dimension that we need to keep in mind. And there are also issues of human capacity for integrating all this knowledge that we are discussing. So many speakers have spoken in this program also. But how to integrate that knowledge? But सब मैं एक मीटिंग में हूँ. Can we? हाँ जी. Yeah, thank you. जी, I will call you. जी. So human capacity to integrate this knowledge, the knowledge of science, the knowledge of management and knowledge of governance into practice, it's very important. And therefore the topic that I have given here for discussing with you all
is leadership and spirituality. And you will wonder that why I have taken this topic. So I will be taking to you all through a journey of around 25-30 minutes with me, where we will try to understand that how the leadership, spirituality are the important dimensions of human capacity for disaster management. Is my slide changed? Sir, full screen कर देंगे kindly. Full Yes, sir. screen. ऊपर में slide share में. अभी पूरा दिख रहा है? पूरा दिख रहा है sir, बिल्कुल Yes, sir, sir. kindly. So I have written here few terms, and just let us look at these terms. Disasters, the definition of disaster we have already discussed. Then nowadays, if we talk of disasters, we cannot do away with the issues of climate change. So climate change, some people say the climate change itself is the biggest disaster. So climate change is a major driver to disasters. The third is environmental extreme. What are the environmental extremes? Anything. Can others please mute their mic? Yes sir. Dhawan sir. हाँ जी जी. Okay sir. जी kindly continue. So environmental extremes. अभी कुछ लोगों के माइक चालू हैं. वो accidentally बोला सर, अवधेश जी कर रहे हैं वहाँ से. हाँ ठीक है. So it is important that we understand that environmental extremes also emerge as disasters, and this is a recent experience, because environmental extremes were earlier not considered a disaster. But many of you would realize that just a year back in Delhi, we because of the air pollution, we had to declare health emergency. So this kind of new disasters which are emerging. Before 2015, ambient heat or heat wave was never considered as a disaster. Now heat wave is a disaster. Cold wave is a disaster. Now a recent phenomenon, that the dust storms, not only in India but entire Asia Pacific region, the dust is emerging as a major driver of disasters. So dust storms are creating a lot of havoc. So the kind of new environmental extremes which are emerging, then sometimes the human-made environmental extremes are also there. For example, the oil spills. So these kind of issues are there. Forest fires, certainly some of the previous experts have also discussed the recent example of what happened in Australia, and now also in India also that forest fire is going on. So these kind of things are now emerging as new dimensions to disasters. Then health risk. Health risk have seldom dealt as a disaster in the past. Now with this pandemic COVID, health risk has been considered as a major dimension of disaster management. And in India, we had to invoke Disaster Management Act also for dealing this health risk. So there are so many new dimensions. Earlier, whenever we used to talk about disasters, it was a geological disasters, and then a little bit of hydrometeorological disasters, and then bomb blast and other things. But now you see the disaster management dimensions have greatly changed. So environmental risk and health risk are at the forefront. Then social and occupational risk. You must be knowing what is occupational risk. Occupational risks are related with ergonomics, that the work environment where we are all working, whether it's industry, whether it is a home, whether it is any commercial establishment or our offices. So the working conditions. In India, we have rarely addressed the issues of indoor air pollution as a major impediment. But we know that in our villages, now we are talking of the smokeless chulhas. In fact, the indoor air pollution has been a major contributor to the disease pattern in the country, particularly of the women health. So, and in the urban areas, the indoor air again is even more contributor to risk as compared to outdoor air, because we are inside the house for more time. So this is also important. Then social risk. What are the social risks? Now, this COVID-19 has also added a new dimension, that large congregation or crowding is a contributor to risk. So how the society can contribute to risk?
how the social conditions can contribute to risk. These are also the emerging dimensions. And all this comes to a new point, that change. So although we all say that change is the only permanent thing, but here the change we are discussing for a particular objective, that the change in our working system, change in our technology, change in our behavior, change in our society, that is now very much warranted, and particularly warranted with the experience of the COVID-19, that we have to rethink all the aspects of our life to bring resilience. And that I would say that this journey of 20-25 minutes that you are having with me is a journey towards resilience. So we are discussing that what are the changes, what are the improvement, and what are the human behavior dimensions that we need. Now let us come to the crisis. What is crisis? So we have discussed a little bit of emergency and emergency response. So what is emergency? So many of you must be aware that an emergency situation is something when your own resources, our own capacities are not able to contain the situation, and you need to call upon the external support or external resources. हिंदी में बोलते हैं ना संस्कृत में त्राहिमाम, then you call God Vishnu, or you call some God to help you, or Lord Ganesha to help you. So something like that, when you call the external support system, in the night, if you fall sick, you call the doctor. Otherwise, if you take the medicine on your own and you're all right, that is called first aid. So this is the difference, and we need to understand that emergency situation is a kind of a critical dimension of disasters, that any disaster, when it leads to emergency situation, we need to call upon the external support system to rescue you, to help you, to protect you, to safeguard you, and to take you out of the situation. That is important. But beside this, now another term, that is a crisis management. The crisis management that goes beyond the emergency management. Emergency management is only when something has gone wrong and the external system helps you safeguard and protects you. But crisis management is a cycle, almost similar to the disaster management cycle. And crisis management encompasses the disasters of the natural origin and the disasters of the human-made origin, and also the disasters like the environmental risk, environmental extremes, or the climate extremes, and technological extremes also. So any kind of situation where you need to have this crisis management plan, and this also focuses much more on preparedness, but crisis management goes beyond dealing with emergency to include kind of a emergency, a post-emergency recovery systems also, and to bring back normalcy. And therefore, there is a convergence, or there is an overlap between crisis management with the disaster risk management and resilience. So again, disaster management, if we can divide into two parts, disaster risk management and resilience. So risk management is basically more preventive, more proactive, and resilience is the capacity to bounce back when the disaster is already there, how fast we can bring back the normalcy. So that includes recovery also, or rehabilitation kind of things also. But what is my focus? These are the things which some of you are already aware, but my focus is that in order to enable the effective crisis management plan, what is the key? Key is the organizational and team effectiveness. For example, we have seen in the COVID situation also, all the countries have different scenarios. And within our country also, all the states have different scenarios. Within the states also, all the districts have different scenarios. And we have been talking about, sometimes we have been talking about the Bhilwara model, sometimes we have been talking about a particular district, that how did they contain, and then we are discussing about the Kerala, we are discussing about the municipal corporation, municipal body effectiveness in managing COVID in Bengaluru. So these kind of things are important because that there the team effectiveness and the organizational capacity had worked in a more effective manner to bring the result on the ground. And therefore, the leadership and cooperation
emerges as important. Then I have put a question: why leadership is more important? Can anyone tell? Any of the participant would tell in brief why leadership is important in crisis management and disasters? कोई बताना चाहेगा? Sir, because he is an emergency, one person has to decide. Otherwise, it will again become a crisis amongst the people who are working for the crisis. So one thing, that when there is an incident command system, we don't have much time to discuss and do conferences. There has to be a clear command system. Is it true? Yeah, sir. So this is one. Any other dimension? Anyone will tell any other dimension of this? Probably because we are always having scarce resources, so to utilize them judiciously, there should be a supreme commander, kind of a leader who has to decide about resource management. Okay. So there are two important dimensions have come. Now I would say that when there is an emergency response, so since the standard operating procedures are already defined, so it is clear command and operation system. Okay. The command has to flow from the top. Okay. But look at the kind of, when we say that community is the first responder, हम बोलते हैं ना, हम कहते हैं community is the first responder. कभी कभी हम कहते हैं your neighbor is the first responder, ऐसे भी बोलते हैं. होता है ना डिजास्टर में, who is there to respond first? बिल्कुल सर, वो जो फर्स्ट गोल्डन आवर जो होता है जिसे हम कहते हैं. हाँ, नहीं, सबसे पहले अगर कोई डिजास्टर होता है, एक्चुअली आपको रिस्पॉन्ड करने वाला सबसे पहले कौन होता है? फर्स्ट रिस्पॉन्ड. जो सबसे पहले आपके पास होगा, फैमिली पर्सन, योर फैमिली होती है या आपका नेबरहुड होता है ना. विलेज के लेवल पे बात करें तो कम्युनिटी इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर. दूसरे कई बार हम लोग ये भी बोलते हैं, हेलो आप म्यूट कर दीजिए बाकी लोग. एंड समटाइम्स वी से दैट पुलिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर. इज इट ट्रू? नो सर, नहीं है. क्यों? नो, I think the sufferers and the peoples who are in the neighbor of sufferers are the first responder. हाँ, बट ये भी सही है, हिंदुस्तान में जब कुछ भी होता है सबसे पहले लोग पुलिस के पास ही जाते हैं. सही है ना? यस सर. तो ये पुलिस भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है. हिंदुस्तान में पुलिस के पास सारे काम के लिए लोग चले जाते हैं, आग लगता है तो भी वहां पे फोन करते हैं, है ना? जी हाँ. तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीका है, बट इंडिया में पुलिस एंड इवन पैरामिलिट्री या ये जो हमारे होमगार्ड्स तक भी लोग होते हैं, दे ऑल्सो समटाइम्स वो सभी कुछ वही लोग पहले कर देते हैं, वो उसके बाद ही लोग कोई दूसरा बुलाते हैं. ठीक है. Different countries have different systems. For example, in Germany, if you get fire, you call only fire brigade. So fire वाले decide करते हैं पुलिस को आना है कि नहीं आना है. यहाँ पे आपको पुलिस तो आएगा ही. ठीक है. So that is a difference. But now, what is my question? जो पूरा का पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट, जब हम क्राइसिस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी मैनेजमेंट में तो ठीक है, एक चेन एंड कमांड है, बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट क्राइसिस मैनेजमेंट, वेयर देयर इज अ साइकिल, that cycle that includes recovery also, and for example जब recovery में बात करते हैं तो उसमें psychosocial issues होता है, psychosocial issues होता है, उसमें counselors भी होते हैं. तो सारी चीजों में कमांड एंड चेन सिस्टम नहीं चल सकता है. चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है. सर्च एंड रेस्क्यू में चल जाएगा, है ना, जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें चल जाएगा, लेकिन सब चीजों में नहीं चलता है. तो जो लीडर की बात करते हैं, वो लीडर क्या होता है? हु इज अ लीडर? तो माय क्वेश्चन इज, हु इज अ लीडर? Leader should be motivator. Leader should be motivator, and the who person motivates all the public about anything happening around. और जो हमारा एंड स्टाफ है, फॉर एग्जांपल हमारा जो ट्रैफिक पुलिस का सिस्टम होता है ना, उसपे चौराहे पे कांस्टेबल खड़ा होता है. हेलो
Are you listening to me? Police sir. Yes. हाँ. Yes, sir. So in our traffic police system, there is a constable standing at the square. देखा है आपने? Yes, sir. Should that person be a leader or not? होना चाहिए सर. He can be leader. Yes, sir. He He has to be a can be or leader. he should be. He can be or he should be. He should be a leader. He should be. Yes. No, sir. Now we got the other dimension. मिला कि नहीं मिला? हेलो, आप कह रहे हैं सर कि लोकलाइज्ड लीडर्स की भी तलाश करनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मैंने सिर्फ इतना कहा कि वो उसको लीडर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. होना चाहिए सर. ठीक है, वो रिजीम बात करेंगे कि लीडर कहाँ पे होना चाहिए, कितने लेवल तक होना चाहिए, बट उसके अंदर लीडर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. लीडरशिप डिपेंड करती है सिचुएशन के ऊपर कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, what is happening in those particular area. If there is emergency required in those particular area, suppose disaster happens, बिल्कुल बिल्कुल दमन साहब, forward he can be a leader also. हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट गार्ड होता है, जब जंगल में आग लगती है ना, जी so that person is the leader in the field. Yeah, definitely he will be, है ना, so he is the leader in the field. Yeah, definitely. हाँ, so you gave very example. हर सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है. बिल्कुल. So करंट सिचुएशन क्या है? बिल्कुल. So when we have discussed that leadership, even सर क्राउड में भी जो है कोई लीडर बन जाता है. सपोज कोई इमरजेंसी क्राउड में आती है, बिल्कुल, तो anybody can lead the crowd. बिल्कुल, वो लीड करके और उसको शांत करे क्राउड को, या उसको मोटिवेट करे, या उसको बिल्कुल तरीके से, है ना. हाँ, there are situations some child can even lead. Yeah, definitely. हाँ, बिल्कुल. So this is important. Now look at this PowerPoint. So I have written certain points. So when we have agreed that leadership is important, so probably for crisis management, these are the important things. That the vision has to be in advance. Do we agree? क्राइसिस के समय पे विजन नहीं बना सकते हम. विजन हैज टू बी ऑलरेडी डिफाइंड वेल इन एडवांस. डू वी एग्री? यस सर. है ना. देन गोल हैज टू बी देयर, देन एम्स हैव टू बी देयर. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग दैट विजन और गोल और एम इज द पाथवे. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव डिसाइडेड दैट वी हैव टू गो टू मुंबई, देन व्हाट आर द रूट्स अवेलेबल. अभी आज के डेट में आपको मुंबई जाना है, सो एक बार हमने डिसाइड किया मुंबई जाना है, बट आप कैसे जाएंगे? वेदर यू, व्हाट आर द पाथवेज? फ्लाइट से जा सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, बट उसमें क्या क्या ऑब्स्टिकल हैं? विच इज द बेटर पाथवे, विच इज द कॉस्ट इफेक्टिव पाथवे, विच इज द मोस्ट सस्टेनेबल पाथवे. सो सिमिलरली फॉर अचीविंग दैट गोल दैट वी हैव डिफाइंड, उसके क्या क्या पाथवे हैं, which is also equally important in disaster management. For example, हम इंजीनियरिंग में भी बात करते हैं कि अगर एक फ्लड प्रोन एरिया है, तो एक पाथवे हमारे पास है कि हम वहां पे एम्बैंकमेंट बना दें या डैम बना दें. तो डैम बनाए भी हैं हमने, बट डैम बनाने से क्या होता है? रिस्क ट्रांसफर होता है. एक जो फ्लड एरिया है वो ड्राउट एरिया में कन्वर्ट हो सकता है, ड्राउट एरिया है वो फ्लड एरिया में कन्वर्ट हो सकता है. एक तरफ का पानी दूसरी तरफ चला जाता है. So I am telling one example. You will have hundreds of such examples that several pathways are there. But दूसरा pathway होता है कि हम एक flood plain zoning कर लें कि which are the safer areas, then कहाँ पे हम permanent housing बना सकते हैं, कहाँ पे हम temporary activities कर सकते हैं, कहाँ पे हम उसको river course की तरह रहने दें. So many things are there. So what are the better pathways for achieving those goals? That is also important. Then pathways के बाद we have to break down into tasks and actions. बट जो फाइनल चीज आती है, वो जो एक्शन को आप जब ऑपरेट करते हैं, डिफाइंड सेट ऑफ एक्शंस जो हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में लिखते हैं, उनको करने वाला कौन होता है?
इसमें लिखा है डायमेंशंस, स्किल्स एंड रिसोर्सेज। वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं जो उसको करते हैं? कैन एनीवन टेल? ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, नहीं होते? सारा का सारा काम कौन करेगा? Ultimately, it is the human being that does the task. Is it true or not? हम कितने अच्छे प्लान बनाने, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी बना लें, हमने आपको बहुत अच्छा फोन दे दिया, आपको यूज ही नहीं करना, तो हम क्या करेंगे? सही है कि नहीं? Yes, sir. कभी कभी आपका फ्रेंड जो आईटी में काम करता होगा, वो आपका फोन को उठाता ही नहीं होगा, तो आप कहते होगे यार कैसे तुम आईटी में काम करते हो और तुम ही आईटी में बड़े कमजोर हो। होता है नहीं होता? कम्युनिकेशन वाले लोग। सो इसका मतलब आपके जो काम करने के लिए जो की रिसोर्स दैट इज रिक्वायर्ड इज ए ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स के अंदर क्या होना चाहिए? स्किल्स होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए। ट्रू? एग्रीड? अब ये ह्यूमन रिसोर्स को मैं बात करूंगा कि मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात क्यों कर रहा हूं। देयर इज ए मेथड कॉल्ड हेजॉब। कुछ लोगों ने सुना है? रिस्क असेसमेंट में एक कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं हैजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी एनालिसिस। हैज एनीवन ऑफ यू हर्ड? ये केमिकल इंडस्ट्रीज में ये हाँ, हम बाद में हमने नेचुरल डिजास्टर के लिए भी जो कंसेप्ट हम लेके आए हैं वो केमिकल रिस्क असेसमेंट से ही लेके आए हैं, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर का रिस्क असेसमेंट अभी हमारा 15-20 साल से चालू हुआ है और केमिकल रिस्क असेसमेंट पिछले 40-50 साल से होता था। सो ये जो हेजॉब की प्रोसेस होती है इसमें 2 डायमेंशंस हम लेते हैं, हैजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी। अब मैं फोकस करूंगा ऑपरेबिलिटी क्या है। ऑपरेबिलिटी मतलब ऑपरेशन। तो ऑपरेशन कौन करता है? हु ऑपरेट्स? कोई भी चीज ऑपरेट करना हो, चाहे वो हमारा जो फायर ब्रिगेड जाता है तो उसमें से जो हम पानी बुझाने के लिए जो मशीन को ऑपरेट करते हैं, या किसी को फायर एचआर से। हाँ, तो अल्टीमेटली इट इज द ह्यूमन बीइंग, है ना? और बहुत सारी मिस्टेक्स आपने देखी होंगी कि जो ह्यूमन बीइंग की वीकनेसेस से, उसकी क्षमता नहीं होने से, या लैक ऑफ स्किल से, समटाइम्स लैक ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस से दोस डिजास्टर्स टेक प्लेस। सो डिजास्टर्स के अंदर ऑपरेबिलिटी एंड ह्यूमन रिसोर्स प्ले ए की रोल। और मैं ये इसलिए बात कर रहा हूं कि आप सब लोग देख रहे होंगे कि हम past 30 years से we are giving great lectures on disaster management. We are conducting so many programs. We are conducting we have written so many books. But फिर भी ground level पे disaster management में कभी-कभी failure हो जाता है। वो क्यों होता है? और उसका analysis करके देखेंगे तो ये पता चलता है कि the operability is sometimes the very important component. जैसे अगर हम बोलते हैं कि you have a gun but you don't know how to operate it, तो रॉबर्स आएगा घर में आपके, तो is that gun helpful? नहीं helpful है, because you are not able to operate. But फिर भी अगर आपके अंदर इतनी स्किल है कि आपको चलानी नहीं आती, आप दिखा के उसको डरा दें, so that is also a human skill. आपने उतना कॉन्फिडेंस के साथ दिखाया और रॉबर्स भाग गए, but anyway that is related with the human capacity. अब दूसरी तरफ एक बात लिखी है, जो दूसरा कीवर्ड मैं यहाँ पे ले रहा हूं, जो मैं आप लोगों से अभी संवाद कर रहा हूं, उसके अंदर क्रिएटिंग लीडर्स। अभी जो शुरू में बात हो रही थी, जब हमने एक ट्रैफिक पुलिसमैन की बात किया और दूसरी तरफ हमने एक फॉरेस्ट गार्ड की बात किया, या हमने बात किया कि कभी कभी कोई सिचुएशन में इवन ए चाइल्ड कैन लीड और एनी मेंबर ऑफ द सोसाइटी कैन इवन लीड। सो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर क्या चीजों की और जरूरत है? अभी जैसे एक बात आई कि लीडरशिप होनी चाहिए, और लीडरशिप कहां होनी चाहिए? टॉप में होनी चाहिए। अब मेरा एक सवाल आप लोगों से है, उत्तर मैं चाहूंगा कि लीडरशिप टॉप में होनी चाहिए, तो वो लीडरशिप का पर्पस क्या होता है? कैन एनीवन आंसर? टॉप की लीडरशिप का पर्पस क्या होता है? सर मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टीज को भी लॉस कम होना चाहिए।
ये तो आपके प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव हुआ ना, ये तो आपका गोल हो गया सर। यू शुड एड्रेस दी सबसे नीचे सर, जो नीचे से लेवल से ऊपर लेके ऊपर लेवल तक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और उन तक इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट होना चाहिए, और उनको ये पता होना चाहिए किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और थोड़ा फ्री हैंड भी देना चाहिए उनको, ताकि दे कैन टेक द डिसीजन इन द एट द स्पॉट। तो उनको सबको लेके चलना चाहिए सर। हाँ, आपने बड़े अच्छे से, हाँ आपने थोड़ा सा टच किया, बहुत सही से टच किया। अब इसमें मैंने Sir, my answer is who can communicate from bottom to top level. जी, क्योंकि फीडबैक भी बहुत जरूरी होता है। ग्राउंड में रियलिटी क्या है उसको जाने बिना अगर आप कमांड देते रहेंगे तो कमांड का कोई मतलब नहीं है कि नहीं? जी। तो इसमें मैंने लिखा है लीडर्स टू लीडर्स आर लीडर्स टू फॉलोअर्स। सो हमारा जो लीडरशिप होता है टॉप का, उसका पर्पस क्या होना चाहिए? टू क्रिएट लीडर या टू क्रिएट फॉलोअर? फॉलोअर मतलब आपकी चीज का हमेशा इंतजार करे। तो लीडर बनाना उनका होना ऑब्जेक्टिव, ना कि फॉलोअर। जी, इसका मतलब, लेकिन सर इसके साथ में हमें फॉलो भी करना आना चाहिए, मतलब दोनों फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मौका देख के हम अपने अंदर के लीडरशिप क्वालिटीज को इनकलकेट कर सकें, आगे प्रोजेक्ट कर सकें। लेकिन साथ में यदि कोई ऐसा सिचुएशन आता है कि इमरजेंसी में कोई नया लीडर डेवलप हुआ है तो उसे उसके अच्छी चीजों को अडॉप्ट करके उसे फॉलो करने का भी क्षमता हमारे अंदर नहीं। आपने जो बातें कही हैं इसको मैं एक तरीके से समराइज करके ऐसे बताऊंगा। एक ट्रैफिक पुलिस जिसकी ड्यूटी, द पर्सन हु हैज बीन पुट ऑन ड्यूटी ऑन ए स्क्वायर, ही इज अ लीडर एट दैट करंट सिचुएशन of the regime of which he is in charge. Is it true or not? है ना? हाँ, बिल्कुल सही। और उसको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी दिया हुआ है। राइट सर। उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस भी दिए हुए हैं और उसको कुछ पावर्स भी दिए हुए हैं। राइट सर। और उसकी कुछ ड्यूटीज भी हैं। सो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दोज पावर्स, within the framework of that jurisdiction, he should be empowered to decide at the situation, होना चाहिए। Because if that person cannot decide every time he asks कि नहीं साहब बताओ क्या करना है, ये गाड़ी आ गई साहब बताओ क्या करना है, है ना? साहब इसमें लाल बत्ती लगी है, गाड़ी लाल बत्ती लगी साहब बताओ क्या करना है, then probably the system will collapse. So leadership is very important. And जैसे थोड़ी देर पहले मिस्टर आशीष पांडा ने बोला था कि golden hour is very important. Is it true? Yes sir. Yes sir. And golden hour के अंदर the person who is in charge of that scenario, the local responder, the local rescuer, or the person who is having the charge at the local level, his role becomes very important. Is it true? Right sir. है ना? So हमारा पर्पस होना चाहिए कि we do not create the followers कि वो हर चीज में हमारा इंतजार करते रहें and हम उसको डिले कर दें डिसीजन को। rather given the regime they can decide the best. decide, देखिए लीडर का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो डिसाइड करने का मतलब कुछ भी डिसाइड कर दे, ऐसा नहीं है। लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है, अभी हम आगे के पावर पॉइंट पे है, ठीक है? अभी इसके बाद वो लीडरशिप की क्वालिटी पे जाएंगे, फिर इस पे आएंगे वापस। अब इस पे आते हैं कि व्हाई लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम इज इंपॉर्टेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। लुक एट दिस पिक्चर। सो फॉर मैनेजिंग डिजास्टर्स there are two set of things. बीच में आप लिखा है, you will find that exposure controls. What is related with exposure? Yesterday also we were discussing about vulnerability. Vulnerability की बात कर रहे थे हम, है ना? So exposure is a very important dimension of vulnerability. सही है? Right sir. तो vulnerability की पहले और वल्नरेबिलिटी के बाद
पूरा this picture you see that you can divide in two parts, before vulnerability and after vulnerability. Okay, so before you are exposed, or before the people are your assets or property is exposed to risk, you have the technical solutions. What are the technical solutions? For example, you can eliminate the hazard, whether it is a natural hazard or technical hazard. आप floods को divert कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं? Right, sir. है ना? आपने levee बना दिया, आपने embankment बना दिया, आपने check dam बना दिया, so you can eliminate kind of disaster. Sometimes you are not able to eliminate, then can substitute. आपने in case of industry, you can substitute the material. In case of natural hazards, you can substitute even the type of people, even type of resources. आपने बदल दिया चीजों को. For example, a river is flooded, and 5 persons you are about to send to cross the river by boat. Now you know flooding is there, the river is flooded. Now अभी आप कौन से लोगों को भेजेंगे वहां पे across the river? जिनको तैरना आता है जी, वो तो तैरना जिनको आता है उनको भेजेंगे. एग्जैक्टली क्या जिनके पास उस तरह के गैजेट्स हों कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें. ठीक है, राइट सर. हाँ, तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सिचुएशन में. देन इंजीनियरिंग सेंट्रिक अप्रोच, जिसमें आप टेक्नोलॉजी का यूज कर लेंगे, कम्युनिकेशन का यूज कर लेंगे, है ना, और आइसोलेट भी कर सकते हैं हैजार्ड को. तो इसके जो आपके पास वल्नरेबिलिटी से पहले चीजें हैं, वो आपको हैजार्ड को कंट्रोल करने के लिए, हैजार्ड को डू अवे करने के लिए थिंग्स. बट व्हेन द थिंग्स आर एक्सपोज्ड, फिर आपके पास क्या क्या चीजें होती हैं? वो सारी ह्यूमन गवर्न डायमेंशंस हैं. इज इट ट्रू? राइट सर. इसके बाद जो सारी चीजें आती हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट की चीजें आती हैं. चाहे वो आपको वार्निंग देनी है, वार्निंग में समटाइम्स नरेशन ऑफ वार्निंग इज इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? यस सर है. आप वार्निंग में क्या कह रहे हैं, कुछ और समझ सकता है कोई उस वार्निंग जी, आप वार्निंग में क्या कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है. आप लोगों में से कुछ लोगों को शायद पता होगा, मिस्टर आशीष है यहाँ पे, इनको तो पता होगा, व्हेन लेट महात्मा गांधी वाज assassinated, आपको पता है न्यूज में क्या आया था? न्यूज में आया था महात्मा गांधी को एक हिंदू ने गोली मार दी. ठीक है, अगर वो हिंदू नहीं बोलते तो क्या होता? दंगे हो जाते, क्योंकि लोगों का डाउट तुरंत किसी एक कम्युनिटी पे जा सकता था. दूसरे, अगर वो कह देते कि उनकी हत्या कर दी तो भी दंगे हो जाते. तो उन्होंने क्या अनाउंस किया उस पे, न्यूज पे, गोली मार दी. अभी क्या हो गए लोग जो है अनसर्टेन है, अभी एक जगह स्पेसिफिक हो गया. हाँ, अभी वो क्लैरिटी नहीं है कि वेदर ही इज अलाइव और डाइड. ठीक है, न्यूज़ को अब्सॉर्ब करने के लिए टाइम भी मिल गया. हाँ, तो लोगों को एक शांति का थोड़ा सा बात करने के लिए, थोड़ा सा एक जो उद्विग्नता होती है उसको कम करने का एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया. एंड दिस नरेशन वाज फाइनलाइज्ड बाय देन जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे सरदार पटेल, वाज हैविंग द एडिशनल चार्ज ऑफ द कम्युनिकेशन टेलीकॉम मिनिस्टर आल्सो दैट टाइम. आप समझ रहे हैं? जी सर. हाँ, तो दूरदर्शन भी उसके, वो इसके अंदर, ये आकाशवाणी उसके अंदर होती थी. ठीक है, एंड इसके बाद आप 84 की बात देखिए. 1984 में क्या हुआ? इंदिरा गांधी आपने तुरंत टेलीविजन पे दिखा दिया. फिर उसके बाद रिजल्ट क्या हुए आपने देख लिया ना. राइट सर. ऑल आर अवेयर कि उसके बाद उसका रिजल्ट क्या हुआ वो आपने देख लिया. सो समटाइम्स द नरेशन, वार्निंग का नरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. आई एम टेलिंग यू एन एग्जाम्पल, जो आई एम नॉट श्योर कि वो जोक है या रियलिटी है, बट उड़ीसा में एक मॉक ड्रिल हुआ था.
जो नालको प्लांट है वहां पे, उसमें एक मॉक ड्रिल हुआ और मॉक ड्रिल में एक जो सिनेरियो लिया गया वो लिया गया ब्लेवी का। ब्लेवी कहते हैं बॉइलिंग लिक्विड एक्सपांडिंग वेपर एक्सप्लोजन। और उसमें सीन था कि ये जो है इसका 10 किलोमीटर रेडियस तक इसका जो एक्सप्लोजन का इफेक्ट जाएगा। समझ रहे हैं आप? हेलो, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, सो वो ब्लेवी हुआ और उसमें ये बताया गया कि अगर आग पे कंट्रोल नहीं होता है, इंडस्ट्री में अगर आग लगती है और कंट्रोल नहीं होता है, तो वो 20 मिनट के बाद वो ब्लेवी में कन्वर्ट हो जाता है। दिस वाज द सिनेरियो टेकन फॉर मॉक ड्रिल। अभी उसके 2 दिन के बाद ही जब लंच का टाइम चल रहा था, लोग अपनी कॉलोनी में खाना खाने जाते हैं इंडस्ट्री में, so I am telling of you a worker who had gone for taking lunch at his home. So स्कूटर बाहर खड़ा किया and he was taking his lunch and then उसको तुरंत पता चला, उसको ये पता था कि आग लगी है। अभी जैसे एक मैसेज आया था कि आग अभी थोड़ा लग गई है वहां पे प्लांट में, और उसको ये ख्याल आया कि आग लगती है तो 20 मिनट के बाद ब्लेवी हो जाता है। क्योंकि 2 दिन पहले वहां पे मॉक ड्रिल हुआ था और उसमें वो मॉक ड्रिल में शामिल था और उसको ये नॉलेज मिला था कि भाई इसके बाद ये ब्लेवी हो जाता है। तो मैसेज आया कि भाई आग लग गई है। तो अभी सोचिए कि 20 मिनट के बाद क्या हो जाएगा? ब्लेवी हो जाएगी। और ब्लेवी होगी तो कितने किलोमीटर तक जाता है उसका असर? 10 किलोमीटर तक कम से कम असर जाता है और 20 मिनट के बाद हो जाती है। तो उसने क्या किया, इमीडिएटली वो बाहर आया, उसने स्कूटर चालू किया, 10 किलोमीटर दूर रखा और वो कहीं मोड़ा नहीं, 10 किलोमीटर दूर रखा। वो सीधे चलता गया और उसने अपनी वाइफ से कहा कि जल्दी बैठो उस पे स्कूटर पे, और सीधे चला गया। उसने कहीं नहीं देखा। और 10 किलोमीटर के बाद जब उसको लगा कि अब मैं सेफ हूं, वहां पे उसने स्कूटर रोका, बीच में उसने ना बात करी ना रुका। और इसके बाद जब वहां पे स्कूटर रोका उसने, तो उसने देखा कि वो उसकी वाइफ नहीं थी। ठीक है, नहीं मतलब गिर नहीं गई, वो उसकी वाइफ नहीं थी, मतलब इट वाज अ डिफरेंट लेडी। अच्छा। So panic sometimes can lead to undesirable consequences. So warnings are important. Then administration is important. And personal protective जो equipment है, अभी आपने देखा होगा जो कोविड में यूज कर रहे हैं, PPE यूज कर रहे हैं, आपने देखा? Yes sir. Many people you find that they do not use the protection properly. Many times people are given gadgets they do not use. So इन सब में बात कहां पे आती है? Ultimately जो end use worker है, end use human resources है, that is very important. In Corona, several policemen were found to be COVID positive. आपने न्यूज में देखा होगा? Even the medical fraternity. हाँ. Why? Because those ground staff, they were never given such kind of leadership. Leadership matlab that training, that effective training, so that they really own the responsibility, they own the authority, and then own the duty. So that is important. Now, for what that leadership is important, this cycle, if we see, right view, right intentions, right speech, right action, right livelihood, right effort, right concentration, and right mindfulness. These are the kind of 8 facets of leadership. And if that person whom we are talking, for example, that policeman or that forest guard, or the person at the ground whose leadership is enabled, then probably this kind of happenings can be avoided. Now, as we were discussing about leadership from top to bottom, what is the difference between the leadership strategies of the past and the current leadership strategy? पहले हम बात करते थे that leadership was power oriented. For example, the leader thinks that I am the leader and rest are followers. So this is the difference. Left side is that approach and other side is a participatory approach. Then
कम्युनिकेशन आप बहुत कम करते हैं, आप उसको उतना ही बताते हैं जितना लगता है कि उसको काम करना है. Then what happens that when the person comes across a unforeseen situation, he is not aware. He cannot decide. He cannot use any kind of authority. He cannot use any kind of knowledge. So regular communication is important. So on the other side, if you see that when there is no disaster, if you discuss with people, अभी इंडस्ट्रीज के अंदर आपने देखा होगा there is a concept called safety circle. Some of the participants may be aware that we call it safety circle. उसमें all the workers are given authority to give suggestions for improving the safety in industries. Similarly, now we are preparing village disaster management plan. So village disaster management plan, we say that it should be participatory. And in the participatory preparation of village disaster management plan, even a normal citizen, maybe he may be illiterate also, any women can also contribute to a new idea or to new innovation. That, in my view, this is important. And I have witnessed this. I went to some of the villages in Andhra Pradesh and Tamil Nadu for facilitating village level disaster management plan. And I found the fisher folk women giving excellent examples, excellent ideas. And if we think that, no, if the sarpanch or if the pradhan start thinking, or the collector start thinking that I am the leader, what is the need to ask these people? So probably the concept of real communication will not be there. Then who is important in implementing? We have to agree that people is important. People at the ground, they are the real workers. So they are the real assets. So this is the new age leadership that we are now working. So each and every leader from top to bottom, what are the kind of abilities we have to inculcate for disaster management and for containing the situation in crisis management also? That we say that the self, he should be aware that who he is, what is his role, what is his responsibility, what is his authority. And for this responsibility and authority, whether he has the adequate knowledge with him or not. If not, then he need to undergo fresh training or the orientation training. Then spiritual leadership. See, no leadership at any level can perform well if that has a kind of a feeling of compassion and responsibility to others. Sometimes you will find some people who have very good responsibility to their own work, but they are not responsible for the colleagues. And you will find that in such situations, systems fail. So the responsibility towards the colleagues, responsibility towards the other members of the society, that is also equally important. And peers, fellows, and the leadership from the soul. So this is also important, that feelings should come from within. And as we also discussed when we teach about discipline, there are discipline which is imposed discipline, that under threat. So discipline under the threat is not the real discipline. Discipline comes from within, and therefore we say that leadership from the soul is important. And leadership with vision and values, this is important. Otherwise, if some worker works hard when others are seeing him, but he doesn't perform well when people are not looking at him, so the system will not perform. So the leadership also calls that whether someone is watching him or not watching him, his performance should be there. As Mr. Dhawan was referring to the forest fire, these forest guards are not being watched by any person. It's a large area, they are working alone sometimes. So their dedication and values from inside are very, very important. And then leadership should gradually evolve. So this leadership contingency theory, this is also important. That leadership based on the leader traits and behavior, that is also important. So when we have to inculcate the real culture of disaster management and kind of a crisis management into our ground level workers, that, for example, now in our country, we are working for creating Apada Mitra at village level. So this is very important. And this is the cycle that you all know. And that is the reason that we have to have this kind of a leadership framework, because in terms of crisis, the emergency response
you need to have command system, but in rest of the phases, you need to have lot of ground level initiatives which are important. Then this is very important about the leadership. A leadership should have a sense of responsibility and togetherness with other peers and other members. So this is a kind of a conceptual plan for coming up with business continuity management to deal with the change management and risk management. That you know the purpose of change, why you are changing. For example, after the COVID, all the industries, all the organizations are making change. Now IITs are deciding that how they will run their classes in the next 6 months or 1 year time. So this is called change management. You change your systems according to the change which is inevitable. You cannot change the corona, so you change yourself. So for this, create your vision, then take stock of the current reality, then choose support. What are the additional things that you need? Then identify strategies for time management. So very, very important. We have lost some time, how you would regain or how you would be able to achieve the same targets within the defined goal. Then take effective action, and then go deeper means you have to re-evaluate, you have to rethink, you have to introspect your own self, whether the alternative plan is giving you the correct results or you need to further improve. Because again, you have to make improvement, and that is again change. So change is a kind of a biggest reality in disaster management. And here it is written like this, that the fundamental key to addressing a crisis is for leaders to not only be honest about the situation and what is you are going to do about it, but that you do so with clarity, humility, and heart, so as to remind people we are in this together. So this is important, that the top leadership and the bottom leadership or the bottom stakeholders need to have a continuous kind of a relationship and a feeling of relationship, so that people perform. Otherwise, people will think that top leadership is deciding without understanding the ground reality. And therefore, these are the 5 important skills which are important. That is communication. Some of the participants were referring to, and motivation, that was also being discussed. Then positivity, then creativity and feedback. So creativity is also very important. In the period of Corona-19 also, we have seen a lot of new kind of innovations that have come up regarding the preparation of masks, preparation of PPEs. Now many people are working for the kind of testing kits also. So many creative contributions were there. So summarizing that, what are important things for leadership in crisis management: self-actualization, keeping self-esteem. A person who loses confidence cannot perform effectively in disasters. So that is important. And that is the reason we have been from our Honorable Prime Minister and all the members were trying to clap for our warriors, to support our warriors, to respect our warriors, so that their self-esteem is maintained. And then give love and belongingness, give safety to these workers, safety to front leaders. That is important. And certainly the physiological dimensions, that what are the important to keep the people in good health. So whether it's the breathing, food, water, sleep, homeostasis, excretion, etc. So these are the kind of things. Now there's a new regime that is coming, that is called work from home. So work from home is again a new change, but whether the work from home is going to create new risks. Tomorrow we are going to have a special webinar on this at 11:30. Some of you who are interested can join. We will be discussing that what are the safety risks and what are the occupational health risks of work from home, and particularly the online working. So we will be discussing in detail tomorrow. And then 4 elements of transformational leaders. Now this modern day leadership that we are talking about, that idealized influence. What are the things so that people should look at you, people should try to follow you automatically. You should not instruct them to follow, people should look at you and follow themselves. Then inspirational motivation, that is important. That helps create leadership
at the ground level also. Then intellectual simulation. Many of our saints, many of our scientists also say that we use hardly even less than 1% of the capacity of our brain. It means our brain has lot of more capacities. So how can we simulate the brain and mind of our young people, mind of our ground workers to come up with the new solutions, come up with innovations and new ideas? That is important. And then individualized consideration. So for motivation, for encouragement, this is important because the people who have contributed exceptionally, their contribution should be recognized and encouraged. They should be honored for their contributions. So this is also important for effective leadership. And in nutshell, the combination of body, mind, soul, and spirit. These are the 4 dimensions of awareness that is important for true leadership. And this kind of discourses are important. So if you look at the posture of this discourse, you will see that the person who is speaking is not authoritarian. This is important because if you otherwise there has been some examples. People ask, "Do we have any doubt?" But the way they ask, people are afraid to asking any more questions. So it should not be like this. Then again, this is the kind of this is the thing which I usually show, that finally what really we want to achieve out of this development, we need to be clear where we are moving ahead. And then at the end, I will come back to what Lord Buddha had taught us, that middle path in the development is more important, that we cannot have a blind race toward materialistic development, but we cannot leave aside the society. So we have to live in this society with keeping a balance between spirituality and the materialistic growth or the economic growth. And this middle path is very, very important for the understanding of the effective leadership. And with this, the last message is that how to balance between the risk and resilience and risk and the kind of sustainability is the nutshell, the key that provides the road to resilience. Thank you very much. Over to Avdesh. Thank you, sir. Ashish, sir. Thank you. Okay, ma'am. Thanks a lot, sir. Shilke, ma'am. Thank you so much for this wonderful and spiritual I think Shilke, presentation. ma'am, your voice is not Yeah, clear. Kindly check your microphone. Shilki, Fine. माइक No. पास रखिए, क्लियर है. What, sir? माइक थोड़ा पास रख लीजिए, क्लियर है. Achha. Thank you, Anil sir, for this wonderful presentation. You have discussed emerging new dimensions in disaster management and role of leadership in disaster management. And you have well explained spirituality, spiritual paths for these difficult times. Thanks a lot, sir. Now, I would like to present some questions asked by audience.